प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपके सामने जो बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन हैं, द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, मैं एक एक करके आपके सामने लूँगा। प्रत्येक वीडियो में एक ही टाइप के क्वेश्चन, एक टाइप का क्वेश्चन मैं लूँगा, और ये आप मानकर चलिए कि वो क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और उसकी पूरी संभावना है आने की। तो मैं आपके 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के माध्यम से करवाना चाहता हूँ, और मैं एक एक क्वेश्चन लूँगा और आप बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना। प्रत्येक क्वेश्चन के कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर दूँगा, आप ध्यान से देखिए जरा। माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई एम टेकिंग फर्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट द रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर। हमने आपके सामने एक वीडियो में रेशनल नंबर की डेफिनेशन बताई थी। रेशनल नंबर क्या होता है? ए रेशनल नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, where p and q both are co-prime numbers and q is not equal to 0. This is the definition of a rational number. It means p upon q is a rational number according to the definition. Now I am taking the question first. Root 2 is irrational number. मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कई बार क्वेश्चन को हल करने के लिए उल्टा चलना पड़ता है। सपोज करो मैं एक एग्जांपल आपको दूं, मैं ये कहूँ कि ये हमारा ये शहर है, ये दिल्ली नहीं है। कोई कहे हमारे को नहीं भाई, इसमें तो लाल किला भी है, इसमें तो और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दिल्ली में होती हैं, तो ये तो सारी इसके अंदर है। आप कैसे कहते हो दिल्ली नहीं है? तो फिर हमें उनकी बात माननी पड़ेगी और फिर आखिर में हम ये कहेंगे हाँ भाई हम गलत थे, ये तो वास्तव में दिल्ली ही है। यानी मेरी बात समझ के होंगे ना आप? मैं एक कॉमन सी बात बताई आपको। तो ये प्रूव दैट रूट 2 इज ए रेशनल नंबर, ये हम मान के चलेंगे रूट 2 इरेशनल नहीं है, रूट 2 इज ए रेशनल नंबर। लेट रूट 2 is rational. Root 2 is a rational number, but according to definition, p upon q is rational number. ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। देखिए ध्यान से, ये हम रूट 2 इज रेशनल नंबर, ये हम अज्यूम करके चलेंगे, और p अपॉन q ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन रेशनल नंबर है ही। तो ये दोनों रेशनल नंबर हैं, इसका मतलब दोनों को कंपेयर करो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, p अपॉन q इज इक्वल टू रूट 2 बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, on both side, squaring on both side, p square upon q square is equal to 2. ये हमने स्क्वायर क्यों किया? इसको रूट को हटाने के लिए स्क्वायर किया, और दिस implies that p square is equal to 2q square. By cross multiplication, p square is equal to 2q square. Here you see p square is divisible by 2 because p square is multiple of 2. P square is equal to 2 into q. Q square is another term. If p square is multiple of 2, it means p is divisible by 2. P square is divisible by 2. If p square is divisible by 2, then p square is one thing.
here. I am writing here. This is third. अब क्या कंक्लूजन निकला? P square is divisible by 2. This implies P is also divisible by 2. Why? देखो P square is divisible by 2. यहाँ देखिए यदि 16 2 से डिवाइड हो सकता है और 16 का स्क्वायर रूट करेंगे, 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 4 इज आल्सो डिविजिबल बाय 2. P square is divisible by 2. P square का रूट निकालेंगे P is also divisible by 2. कोई भी एग्जाम्पल आप लीजिए, यदि उसका स्क्वायर 2 से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी 2 से डिवाइड जरूर होता है. नेक्स्ट, we can write now when P is divisible by 2, it means we can write P is equal to 2m, and by squaring P square is equal to 2m square, 4m square. By squaring P square is equal to 4m square, and here this is third, this equation is third and this equation is fourth. By comparing from third and fourth, here P square is equal to this, P square is equal to this. It means 2q square is equal to 4m square. Q square is equal to 2m square. Q square is equal to 2m square. Here again Q is also a multiple of 2. In the right hand side, 2 into m square. M square may be any number. So 2 is here. We can say that Q square is divisible by 2. This implies Q is also divisible by 2. Here. अब देखिए इससे क्या है, यहाँ हमने सिद्ध कर दिया Q 2 से भाग हो सकता है, और हमने यहाँ ये सिद्ध किया था P is also divisible by 2. This is, suppose this is 5 or this is 6. From 5th P is divisible by 2. From 6th Q is divisible by 2. It means P and Q both are divisible by 2. It means P and Q both are divisible by 2 from 5th and 6th. But here P and Q both are divisible by 2. It means P and Q have a common factor. This implies P and Q have a common factor 2 other than 1. But by according to the definition of a rational number, what
P and Q are co-prime number. But P and Q are co-prime number. Therefore, our assumption was wrong. Our assumption was wrong. Hence, root 2 is a irrational number. Root 2 is a irrational number. Hence, next. मैं इसको बहुत जल्दी लूंगा. Now, root 3. We have to prove root 3 is irrational. Irrational number. Now, let root 3 is rational. मेरे साथ साथ चलिए जल्दी. Root 3 is rational. But according to definition, PQ is a rational number. This is first, this is second. From first and second. P upon Q is equal to root 3. By squaring on both sides. P square upon Q square is equal to 3. By cross multiplication, P square is equal to 3Q square. By cross multiplication, P square is equal to 3Q square. This implies, from first example you have seen, P square is multiple of 3, hence P square is divisible by 3. This implies P is also divisible by 3. Again, let P is equal to 3n. P is equal to 3n. By squaring, P square is equal to 9n square. This is third. This is fourth. By comparing by 3 and 4, 3Q square is equal to 9m square. Q square is equal to 3m square. Again, see here. यहाँ पर देखिए Q square 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है. राइट साइड में देखिए. It means, with the help of the first example, it means this implies Q square is divisible. Q square is divisible by 3. This also implies Q is also divisible by 3. This is P is divisible by 3, 5. Q is divisible by 3, 6. From 5 and 6, P is divisible by 3, Q is divisible by 3. It means P and Q have a common factor 3. But P and Q both are co-prime number according to the definition. So this is against our assumption. Right here. P and Q have a common factor.
common factor 3, but according to definition of rational number, P and Q are co-prime number. This is against our assumption. Therefore, our assumption was wrong. And root 3 is a irrational number. Root. So my dear students, today two examples, root 2 and root 3 are irrational number. ये हमने सिद्ध किया कि रूट 2 और रूट 3 इरेशनल नंबर है, लेकिन हमने इनको रेशनल मान करके हमने सिद्ध किया। दोनों में देखा एक जैसा तरीका, सिस्टमेटिक। आप एक बार इन दोनों क्वेश्चन को करके देखिए, बहुत ही आनंद आएगा। और इसी तरीके से आपने सिद्ध करना है घर पर, रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर, ये सिद्ध करना है आपने। सो my dear students, in the last I want to make a request to you, please subscribe the channel. I shall be very thankful to you, and tomorrow I will take second question for the 10th examination preparation, Central Board of Secondary Education. Thank you.